हेलो गाइस। आई होप आप सब ठीक हो। मेरा आप सबसे आज एक सवाल है कि क्या आप अपना डिजिटल बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? क्या आप ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट चाहते हो? आई एम डैम श्योर आप ऐसा ही चाहते हो। इसीलिए आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। तो आज मैं आपको मार्केटिंग का टाइप जो कि है ईमेल मार्केटिंग, इस टॉपिक पर बताना चाहूंगी। अच्छा गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर माय यूट्यूब फैमिली एट द एंड। सो मैं स्वरा फ्रॉम टेक अमरेंद्र चैनल आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज का ये ईमेल मार्केटिंग मिनी सीरीज का पहला वीडियो, जो कि है स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड इट्स फंडामेंटल्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का एजेंडा है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहले तो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, देन अबाउट ईमेल मार्केटिंग, देन ईमेल मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। ओके, ऑल राइट। सो नाउ ऑनलाइन मार्केटिंग, फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, उसमें हम बात करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग इज नाउ अ पार्ट ऑफ अवर रियलिटी, अग्रीड, always included in the business plan and as a medium of improving and growing our businesses. Agreed? I guess all are agreed to my point. Its potential has been proven so many times that it is slowly taking over, isn't it? And it also leaving the traditional marketing techniques like TV, magazine, newspaper, all these things behind, isn't it? It is estimated that almost 40% of the world's population use the internet, and COVID से तो और ज्यादा हो गया। And right, with this in mind, it is natural to think of the internet as a great platform for advertising your business and growing your business. So अभी हम आगे चलते हैं। These are the 5 types of email of basically marketing. Okay. So these are, first is search engine marketing, then second is social media marketing, then content marketing, affiliate marketing, and then email marketing. गाइस, आज हम इस वीडियो में ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करेंगे और इसी पे और भी पार्ट्स आप सबको एक मिनी सीरीज के द्वारा जल्द ही देखने मिलेंगी, जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सको विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड विथ फुल क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मार्केटिंग के टाइप्स में मेन डिफरेंस है मीडियम। ओके, माध्यम जो कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं, isn't it? So out of all the types of online marketing, email marketing delivers the highest ROI for marketers, which is why it is so widely used. ROI is nothing but return on investment. Okay, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पे हमें कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज ROI। यहाँ आप सब देख पा रहे हो कि कैसे ये ग्राफ में वेरिएशंस है। ओके, जो ग्राफ हमारा ईमेल मार्केटिंग का है उसके कंपटीशन में जो बाकी के जो रेडियो, टीवी या ट्विटर, ये सब के जो मार्केटिंग है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। Why this is happening? So this is just because emails are so important that almost a large percentage of people do check their email inbox daily. Yeah, and this gives a high potential to reach online consumers. Yeah, email marketing should be a personalized approach where your goals is to directly communicate with the online users. So in order to achieve something such as to generate sale, to generate lead, to get visitor, encourage downloads, anything you want, yeah, you can achieve it online with the help of email marketing. Okay,
चलो अब next to understand the importance and the major role email marketing has nowadays, we will review some of the most relevant email marketing statistics, guys. Yeah, which you can be able to see on my screen. So we'll see the statistics. Yeah. So first is a single person is sending and receiving over 200 emails a day on an average. So guys, imagine 200 emails a day. Yeah. So how many ROI? How much ROI? If this person is marketer, so how much ROI he might be getting? The total number of worldwide email accounts is expected to increase over 4.3 billions. Imagine 4.3 billion accounts by the year 2027. Yeah. So we all should try to go online and grow our business online digitally. So the next is 35% of email recipients open email based on the subject line alone. So over here, I would say subject line is the catchy line or the main motto which we have to focus in email marketing. अगर सब्जेक्ट लाइन कैची नहीं है तो आप अगर मेल भेज भी रहे हो तो वो ऐसे ही अनरीड रहेगा, isn't it? सो ये कैची हम कैसे बनाएंगे, तो ये सीरीज जो ईमेल मार्केटिंग की सीरीज है उसमें हम आगे के वीडियोस में ही देखेंगे. सो द नेक्स्ट इज for every dollar spent, for every $1 spent, I must say, email marketing generates $38 as ROI, as return of investment. So सोचो कितना profit है. We can say 83% of business to business marketers use email newsletter for content marketing. Guys, आपने इनबॉक्स में चेक किया होगा, आपको न्यूज़लेटर्स आते हैं या फिर वेबसाइट पर आप जब जाते हो तो वो पूछता है आपको न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने के लिए, ईमेल आईडी डालने के लिए. तो वो एक चीज ईमेल मार्केटिंग का ही हुआ. या एंड ऑलमोस्ट 83%, या 83% of marketers of business to business marketers use this scenario, use this strategy. Then next is targeted emails generate 58% of all revenue. See, टारगेट हम बहुत सारे ईमेल्स करते हैं, कोई बाउंस होता है, कोई सक्सेस होता है, तो वो सब मिलाकर 58% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है ईमेल मार्केटिंग से. सो इमेजिन what is the influence of doing email marketing. Yeah, guys. So last is email marketing technology is used by 82% of the companies. Yeah, this is exactly. Almost each and every company is going online. It is going digitally. Yeah. So guys, in short, हम कह सकते हैं कि email marketing is one of the most used types of online marketing. Isn't it, guys? And it also has the greatest return on investment. Secondly, personalization and segmentation are important for reaching success in email marketing also. And lastly, mobile share in email marketing is also on the rise. Yeah. So now I would like to thank you very much to bear with me. And now it's time for the announcement. That is, we have started the most awaited digital marketing course for all of you guys on special request from many of the YouTube subscribers, YouTube of my YouTube family. So guys, feel free to contact on the numbers which is visible over here on your screen with full confidence. Thank you guys.